Hello, participants. Today, I am going to give you a very simple solutions to research. Suppose if you want to indulge yourself into research, you have to remember a very simple concept, and I generally call it as 5W and 1H. This particular concept of 5W and 1H has played a very pragmatic role, a very important role in my life in solving many of the research problems. Let us start to look at the different kinds of why we have. First is why. Why means what? Why means an objective. हम क्यों करने जा रहे हैं? कोई भी एक रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका कोई एक पर्पस होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक एम होगा. Why? हम किस चीज़ पे रिसर्च करने जा रहे हैं? What is that? It is called what? क्या किस चीज़ पे रिसर्च करेंगे? वो एथनोग्राफिकल रिसर्च होगा, वो आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा, वो कोई अप्लाइड रिसर्च होगा, कोई एनालिटिकल रिसर्च होगा, किस पे रिसर्च कर रहे हैं? सो दैट इज व्हाट. रिसर्च कब करेंगे, यानी कि व्हेन. कैसे करेंगे रिसर्च को, कौन सी जगह पे रिसर्च करेंगे. सो व्हेन का मतलब क्या है? आपने एक टाइम पीरियड लेना है. हम लास्ट 10 साल का रिसर्च देखेंगे, लास्ट 5 साल का रिसर्च देखेंगे, या लास्ट 3 साल का रिसर्च देखेंगे. तो हम रिसर्च का टाइमिंग के बारे में बहुत जानना चाहेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी शॉर्ट टर्म, इट कुड बी लॉन्ग टर्म, इट कुड बी अ मैक्सिमम, मतलब एक डिकेड का भी हम डेटा जनरली उस पर देख लेते हैं. सो व्हेन. देन कम्स योर हूम. आपका ऑडियंस कौन है, किसके लिए रिसर्च करें, कौन आपका टारगेट ऑडियंस है, जहाँ से आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे, कुछ करेंगे. तो वो डेटा कहाँ से आएगा? हु आर योर टारगेट ऑडियंसेस, कहाँ से डेटा को आप कलेक्ट करेंगे? हु that. And then comes your you have the what, you have when, you have where, you have whom, and then comes your how, the methodology part, the entire process. एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में जब आप रिसर्च करते हैं, उसका एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है. तो ये जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये डिफरेंट इंटरवल्स में किया जाता है इसको, एंड देन अल्टीमेटली इट कम्स टू अ कंप्लीट कंक्लूजन्स. सो इट इज, वी हैव टू सी, आई मीन इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. यू नीड टू लुक एट इट. इट इज वाई वी आर डूइंग द रिसर्च, what is the objective of that research, when is the time frame, that particular time frame we will look into the research, it is 10 years or so, where, that is a place, a location, a geological locations or geographical locations, where, and then comes your whom, who is your target audience, and last is your how you are going to conduct the research. There are different methods are there in doing that research that we will coming up in our subsequent videos. You keep on watching us, and we will train you a very simple method of research to you. Thank you.